औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, CS201 की जो फ़ाइनल एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQs फ़ाइल है हमारे पास, उसका सेकंड पार्ट लेके हाज़िर हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। ये वो MCQs हैं जिनमें से आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप अगर ये फ़ाइल कर लेंगे तो आप इसमें से काफ़ी सारे जो MCQs क्वेश्चन हैं आप उनमें से सॉल्व कर लेंगे और वो आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना, आपका इसमें बहुत फ़ायदा है। और जब आपका फ़ाइनल टर्म हो जाए तो आपने कमेंट करके बताना है कि कितने आपने MCQs इसमें से अटैम्प्ट किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी ये सेकंड पार्ट है, तो इसके टोटल 4 पार्ट्स होंगे CS201 के। तो आपने चारों पार्ट्स को देखना है ताकि आपका MCQs का जो फाइनल टर्म का पेपर है CS201 का, वो कम्प्लीटली MCQs जो है आपके कवर हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल is called by reference for the following functions: prototype, void function, int function, and num. What is the highest legal index for the following array? 3. Which of the following is the correct way to initialize a character array course with string programming? Course 12 is equal to programming. Using a segment of source code, again by adding new functionalities with slight or no modification, is termed as code reusability. Dash executes all the lines before error and stops all the lines which contains the error. Interpreter. Which of the following value are used in C or C++ to represent true and false, 1 and 0? When break statement is encountered is in switch statement, it exits from switch statement. What will be the output of this code segment? इस तरह का अगर कोड आ जाता है तो उसका फर्स्ट देखें आप, इसका 2 आ रहा है, इंट अरे 6 इज इक्वल टू 2 3, तो 2 फर्स्ट आ रहा है तो लास्ट में इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 2 है। तो यहाँ से आपने इसका कंसेप्ट ले लेना है। इन C++, इंटीजर कैलकुलेशन अकर्स इन बाइट 4 बाइट्स. In Window operating system, function calling is like sending a dash to the object message. मैसेज सेंड किया जाता है तो उससे आप कंसेप्ट जो है ले सकते हैं कि इसका मैसेज होगा। The static data members of a class will be initialized within class. Which of the following option is true about static data members of a class? Last वाला इसका जो है वो करेक्ट है। The static data members can be private or public. When a variable is defined as static in a class, then only one copy is created for all objects of this class. The pointer returned by the new operator points to dash of memory chunks allocated by the new operator first memory address. A dash is considered as a special type of pointer, तो reference इसका बनेगा। Which of the following operator the compiler overloads for objects by default is equal to operator? If C1 and C2 are object of the same class, what would a user get after compiling the following statement? C1 is equal to C2. The programming will execute successfully without any logical error. What template function the compiler
automatically detected the dash passed data and generates a new copy of a function using passed data. What does STL stands for? स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी. अब ये देखें डिफरेंट फाइल्स हैं, डिफरेंट ये फाइल्स हैं और उसमें से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपने इस MCQs को 100%ली इसको आपने करना है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बार बार एग्ज़ाम में आ रहा है. टेम्पलेट प्रोवाइड वे ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग डैश इंफॉर्मेशन टाइप इंफॉर्मेशन. The appropriate data type to store the number of rows and columns of the matrix is int. ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है तो इसको भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना है. Classes defined inside other classes are called dash classes, nested classes. Dash data member of a contained object can be accessed from inside of the containing class. Public, private, protected, ऑल, ये तीनों हैं. तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, इसको भी आपने ज़हन नशीन कर लेना है, ये भी बार बार एग्ज़ाम में आ रहा है आपके. इफ़ वी राइट a statement like S2 is equal to S1, dash will be S2 calling object and S1 will be passed to the operator as an argument. We can use cin peak function to see the next character that we are going to get. The stream insertion and stream exertion. अब ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है तो इसका है थर्ड वाला यूज़र डिफाइंड एंड बुल्ट इन डेटा टाइप. अब मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा, तो आपने इन फाइल्स को करना है तो आपको कन्फर्मली पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं और वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी सारी फाइल्स इंपॉर्टेंट है लेकिन इनको आपने मज़ीद अच्छे से करना है. द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ रिवर्स एज एन कंस्ट्रक्शन ऑर्डर. A constructor will create a new object with a full copy of the other object. This type of copy is known as deep copy. A macro when takes arguments is called parameterized macro. Which of the following is not a preprocessor directive? Preprocessor directive कौन सा होता है? Hash undefined. Static allocation is dash efficient than the dynamic allocation. It depends on the situation. The function free returns back all allocated memory got through calloc and malloc to heap. If a constructor contains a return statement in its body, then compiler will go syntax error. New and delete are also used with classes or structures and primitive data type as well. Memory allocation. A memory allocated at return time is a system resource and it is the responsibility of dash to deallocate the memory. Programmer. Friend class of the other class gets complete access to all data member and member functions. Well, overloading a new and delete operator, we should take care that they should be overloaded for specific type instead of overloading globally. In case of dash, a default mechanism, variable default. A constructor has the same name as that of a class. The destructor for all the object in the program is automatically called when program is terminated.
तो ये MCQs हो गए हैं। अब नीचे मैं फर्दर आपको लॉन्ग क्वेश्चन रिलेटेड जो है क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उनको आपने ख़ुद उसका आंसर फाइंड करके आपने इनको कर लेना है। तो ये फर्स्ट हमारा देख लें क्वेश्चन, what will be the value of given expression after evaluation if x is equal to 3 and y is equal to 2। तो इसका आपने आंसर फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट भी इसी तरह का कुछ है, when memory is allocated dynamically used using new operator within the constructor of class, then what is the appropriate place to deallocate the memory। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के हिसाब से भी, तो आपने इनको भी अच्छे से कर लेना है। ये 6-7 हर फाइल में लास्ट में आते हैं, इनको सॉल्व खुद करना है आपने यहाँ से देख के। तो उम्मीद है ये MCQs आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे, तो मस्ट करना है आपने इस फाइल को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को साथ में लाइक किया करें। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो हम इंशाल्लाह जितनी भी हमारे CS रिलेटेड कोड्स हैं उनके रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करेंगे MCQs रिलेटेड, ताकि फ़ाइनल टर्म के जितने भी आपके CS रिलेटेड कोर्सेज़ हैं वो MCQs आपके अच्छे से कवर हो जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।